arrival of our esteemed chief guest, Mrs. Huma Akhtar. Parents are requested to stand in honor of our chief guest's arrival. What a wonderful afternoon it is. Do you know, Bhavya, that our school started with mere 9 students and today educates more than 3,000 girls every year. Oh, is it so, Rohini? I'm really glad to hear that. A very warm good afternoon to one and all present here. We are honored to see such an enthusiastic and exuberant audience on this day, the 10th of December 2022, to witness the annual day celebration of our school, St. Joseph's Convent High School. On behalf of the management, staff, and the students of our school, I take the privilege to extend a hearty welcome to our honorable chief guest, Mrs. Huma Akhtar. She today stands as an excellent example of perseverance and determination. To be inspired is great, but to be an inspiration is an honor. It is with deepest pride and greatest pleasure that the chief guest, herself is an ex-Josephite from batch 2007, who holds an esteemed position as the Assistant Commissioner, State Tax of the Commercial Tax Department, Bihar. We would also like to extend a hearty welcome to our esteemed principal, Sister Josephine, our SJC sisters, all the other fathers and sisters from far and wide. A special welcome to our lovely parents who took out time from their busy schedules to unite here after 3 long years of the deadly pandemic to grace this occasion with their esteemed presence. Now, I would like to invite our honorable chief guest, Mrs. Huma Akhtar, our esteemed principal, Sister Josephine, Sister Shanti, who is today representing our manager, Mr. Rai Saurav Nath, Dr. Utpal Anand, for the inaugural lamp lighting session. Let us all wish that this light of knowledge dispels the darkness of ignorance and ignites the lamp of gratitude for the abundance that the divine has bestowed in us. Our head girl, Ritika Chakraborty, to honor our esteemed chief guest, Mrs. Huma Akhtar, with a bouquet to express our reverence and extend our humble gratitude for her encouraging presence and precious time. Malala Yousafzai once said, "One child, one teacher, one pen, and one book can change the world." This quote itself portrays the importance of education, freedom, peace, and the presence of a teacher in everyone's life. Education has always been the backbone of our society. Historically, women's education in Britain was designed to train girls belonging to the upper class. They were trained and educated not for their emancipation as individuals, but to only conform with the societal standards and for matrimonial reasons. It is therefore imperative that we bring to limelight the foundress of this institution, Venerable Mother Mary Ward.
Venerable Mother Mary Ward, born on 23rd January 1585 in Yorkshire, England, lived at a time when women were not seen capable even to comprehend spirituality, let alone the very thought of being leaders. Mary Ward was a woman of vision and took up the challenge to deliver education to young women who could transform society to a great extent. She had developed a passionate love for justice, integrity, and freedom. Countless people now emulate the precious teachings, maxims, and ideals of this great lady till date. She once conveyed through one of her maxims that women in time to come will do much. Seeing all this, Mother Mary Ward stepped forward, bringing about a thorough improvement in the society. It was in 1853 when the visionary bishop, Anastasius Hartman OC, the apostolic vicar of Patna, was of the opinion that the society could be uplifted by educating women. With the initiative of Mother Catherine D. Gracio, IBMV, 5 sisters from Germany came to India. They reached Mumbai by ship in 1852 and then set out for Patna, where they reached around February 1853. Our esteemed institution was then established in 1853 on the banks of River Ganga. Our institution has witnessed its successful sesquicentennial year in 2003 and is heading towards its glorious 175th year in the next 5 years, that is, the Delhi semi-septennial. Martin Luther King Jr. once said, "Life's most persistent and urgent question is, what are you doing for others?" For the answer to this statement, our school has always been initiating small acts on humanitarian grounds. The HJC family is not only restricted to the 4 walls of our campus, it has outreached various underprivileged sections of our society and has given innumerable people a reason to smile. It has revived hope within countless waning hearts. This prestigious institution has a glory which resembles the star-studded cosmos. The teachers and the sisters have always worked relentlessly to carve out independent and industrious girls. The school has ignited the flame of ambition and unwavering enthusiasm within countless hearts. The teachers have clasped the hands of the students and led them from the darkness of uncertainty to the light of a bright future. Josephites exude confidence, bravery, and compassion, which is a result of the ideals of our institution and its backbone, the well-organized management. Our students have always stood by consistent efforts and persistent hard work, along with discipline and punctuality, which has paved their way towards success. Josephites across the globe always stand apart and have an extraordinarily sheen personality. They have carved out a niche for themselves. Institutions like ours have always played on the front foot and raised, nurtured, and given Bihar, as well as our country, many enterprising women. They have been the nucleus of the flame, which has led women from ignorance to self-reliance. Women, as a whole, have always been overlooked, oppressed, and ignored. Thought of as creatures limited to emotions and objects of beauty. Their achievements are often overshadowed by their domestic skills and physical appearance. I'd like to quote Joe March from Little Women. Women have minds and souls as well as just heart. And they've got ambition and talent as well as just beauty.
An educated woman is always poised to enlighten every person around her with knowledge. As once quoted, feminism is another word for equality. Today's program is based on a thematic representation of women empowerment and emancipation. Today, we have gathered here to witness the exuberance and passion of our students. So, please wait with bated breath on your seats to enjoy the breathtaking performances of our students. These moments of laughter, frolic, and fun will forever remain etched in our hearts. Thank you. This afternoon seems to be full of promises. Shouldn't we begin the program with some divine recitation, Madhya? Yes, I agree, Zoya. A prayer is the most powerful weapon against trials, the most effective medicine against sickness, and the most valuable gift we give to someone we love. The power of prayer is the most precious wealth amongst everything. Let us grow in the grace and knowledge of our Lord. And to start a process, we must connect ourselves with the Almighty. So, let us begin our annual function with a prayer dance, Satya Swarupa Deva, and invoke the divine presence of the Almighty amongst us.
Most things are wrought by prayer than this world ever dreams of. From this dance, we can definitely sense the presence of God around us. Doesn't it give us a healing touch? Yes, indeed it does. Now, it seems more fitting to welcome our guest with a melodious lyric to bring about a sublime mood on this occasion. To welcome is to show gratitude. To welcome is to honor our guest. A beautiful smile is the best universal welcome. It can give the day a good start. Here, we present before you an Elysian song to welcome our chief guest. Swagatam,
Anushka? Yes, Sanvi, it really was. Let us head towards the English play now. What is it all about? The Merchant of Venice is one of the popular plays written by William Shakespeare, the Bard of Avon. The story deals with the protagonist Antonio and his friend Bassanio, who is in love with the rich and beautiful Portia. The students of classes 8 and 9 will stage before you the famous trial scene of the play. This sounds interesting. Could we know what happened in the story? Certainly, the story so far. Antonio, a rich merchant in the city of Venice, has a beloved friend Bassanio, who wants to go to Belmont to woo his lady love, Portia. However, Bassanio, being a spendthrift, has no money for this trip. Therefore, he asks for a loan from his dear friend Antonio. As far as I know, Antonio had no cash and all his ships were at sea. So, how could he suffice Bassanio's needs? Antonio borrows money from Shylock, a rich Jew but a cruel moneylender. Shylock therefore makes Antonio sign a bond, projecting it as a joke, which says that he will not charge any interest on the loan, but he will take a pound of flesh from nearest Antonio's heart if he fails to repay the 3,000 ducats within 3 months. A pound of flesh? That sounds terrifying. It sure is. Time flies and Antonio's ships get lost at sea. He therefore has to give a pound of his flesh to Shylock, which in other words means inevitable death. All appeal to Shylock for mercy, but it falls on deaf ears. Death is imminent for Antonio. When a lawyer Balthazar and his clerk enter the court, they are none other than Portia and Nerissa disguised. What comes next is for you all to sit back and enjoy. This is Merchant of Venice with a modern touch. Let's wait patiently to watch the climax. It's true, the best view comes after the hardest climb. Your Grace, I'm already here. You have come to defend yourself against a stone-hearted enemy. I've heard that Your Grace has taken great pains to moderate the harsh legal proceedings. I'm ready to face his cruelty and anger with a calm spirit. One of you go and call the Jew to the court. He's already standing at the door. Here he comes. My lord. Make room. Let him stand before me. Shylock, everyone thinks, and I also think, that you will act according to human gentleness and love and forego a portion of the original sum borrowed by Antonio after looking sympathetically at the losses that Antonio has suffered. I have informed Your Grace of my intentions. I have vowed by the Sabbath that I will have my dues and penalty laid in the bond. You want to know why I prefer rotten flesh instead of 3,000 ducats? I will not answer that, except that I have a fancy for it. What do you say, Bassanio? This is not a satisfactory answer. You are a heartless man on account of your merciless actions. Every fault is not hated from the very beginning. I am not obliged to give you a satisfactory answer in order to please you.
I request you to not make any more offers, not to take any more steps, but with all due speed and simplicity, as it is convenient to you. Let me have my judgment, and let the Duke have his will. Here are 6,000 ducats instead of your 3,000 ducats. If each of these 6,000 ducats were divided into 6, and each part was a ducat, yet I would not accept them. I would have only my bonds. If you show no mercy to others, how can you hope for God's mercy? What judgment do I fear for when I have done no wrong? Cheer up, Antonio. Have courage. The Jew will have all of my blood, my flesh, and my bones before you lose even one drop of your blood on my account. Have you come from Dr. Bellario from Padua? Yes, from Padua and from Bellario, my lord. Bellario sends his greetings to your grace. Why do you sharpen your knife with so much of attention, Shylock? To cut off a pound of flesh that has been promised as per the bond by this bankrupt man. Here comes the doctor himself. Give me your hand, sir. Do you come from Bellario? Yes, my lord. You are welcome. Are you aware of the nature of dispute involved in the present case before the court? I have full knowledge of it. Is your name Shylock? Yes, Do you admit having made this agreement? Yes, I do. Then the Jew must be merciful. on what ground should I show mercy? Tell me that. Is Antonio able to pay the money? Yes, here I am to pay it for him in the court. I am prepared to pay twice the amount. And if that is not enough, I will pay 10 times more. If I fail to do so, I shall forfeit my hands, my head, and my heart. If this is not sufficient, then it appears that malice is destroying honesty. Kindly let me see the bond. Here it is, most respected doctor. Here it is. Shylock, here is thrice the due amount offered to you. I have taken an oath before God. Shall I commit the sin of oath breaking on my soul? No, not even for the sake of Venice. Well, the penalty mentioned in this bond is due, and the Jew can claim legally a pound of flesh to be cut off closest to the merchant's heart. Be merciful. Take 3 times the amount and let me tear up this bond. I insist on having the strict terms of the bond. Well, then be it so. You must prepare your bosom to be cut off by his knife. Yes, his chest. That is what the bond says. Does it not? Noble judge, nearest his heart are the exact words. Is there a weighing machine here to weigh the flesh? Yes, I have it ready. And also, arrange for a doctor to be present here at your own expense, Shylock, to prevent his wounds from healing, lest he should bleed to death. Is that laid down in the bond? No, it is not laid down. So, but what about that? It is good, yet you should do so out of kindness. I find no such conditions to do so. Have you anything to say, Antonio? Very little. I am ready and well prepared. A pound of this merchant's flesh is yours. The court awards it to you, and the law sanctions it. But the bond does not permit you to shed the smallest drop of blood.
If you shed one drop of Christian blood, then by the laws of Venice, all your lands and property will be confiscated by the state. Is that the law? You shall see the act. You demanded strict justice. You shall receive justice more than you desire. Then I accept the earlier offer. Pay me 3 times the amount and let the Christian be free. Here is the money. I have it ready for you. Stop. The Jew will have full justice. He will have nothing but the penalty. Give me my principal amount and let me go. You have already refused it in the open court. Now you shall have nothing but the penalty to be taken at your own risk. Then may the devil take him. I shall not stay any longer. Wait a while, Jew. The law has another claim on you. It is laid down in the laws of Venice that if it is found against a foreigner that he conspired directly or indirectly against a Venetian citizen's life, then that citizen against whom he plotted is entitled to 1/2 of the foreigner's property. The other half is to be paid into the treasury of the state. In addition to this, the offender may retain his life only by the exercise of mercy by the Duke. I grant you your life even before you ask for it. Half of your wealth now belongs to Antonio and the other half belongs to the public treasury. But it may be reduced to a fine instead if you humbly beg for mercy. Shylock begged for mercy, and the Duke granted him his life. Half of his property was returned to him, while the other half was entrusted to Antonio to be given after Shylock's death to his daughter Jessica, who had eloped and married a Christian Lorenzo. Bassanio and Portia, who had earlier got married, were happily united in wealth. Antonio's ships returned to port. So all was well for Antonio and Bassanio. Thus we see Portia saved the day. She turned the tables against Shylock, who had trapped Antonio into signing the bond. It took the wisdom of a woman to save Antonio from Shylock's clutches. It took a woman to snatch her husband from the jaws of death. I speak of the timeless story of Satyavan and Savitri. East or west, cutting across all cultural barriers, women have always stood out for being wise, intelligent, and dedicated. So let us all celebrate womanhood and the strong, empowered woman. Receive justice more than we desire. Riya Rani as Shylock. I insist on honoring the strict terms of the bond. Ritushri Biswas as Antonio. I am ready to face his cruelty and anger with a calm spirit. Avantika Neeraj as Bassanio. This is not a satisfactory answer, you cruel Jew. Sanskriti Srivastava as the Duke. I grant you your life even before you ask for it. Nishika Anand as Celerio. He is here, my lord. Priya Prasad as Nerissa. Yes, my lord, I am from Padua. Kashika Srivastava as the clerk. Sumaira Seher and Mehab Abdeen as attendants. Those who work behind the scenes to make this a success. Pragati Mehta and Mahi Gupta as prompter and volunteer. And our DJs, Madiha Fatma and Supriya Raj. And last but not the least, I am Anushka Sharan, the narrator.
on the plate. It is twice blessed, it blesseth him that gives and him that takes. This trial scene definitely presented the divine quality of mercy to all of us. It also portrays Portia as a prudent and empowered woman who saved the life of Antonio when no one was able to. I'm sure the audience is eager to know more about the next song, which is a tribute to Mother Mary Ward. To love the poor, live and die and rise with them was the aim of Mary Ward. The existence of many modern educational and charitable congregations was made possible by the endurance and perseverance of Mary Ward, a woman of profound compassion, unshakable faith, and unflagging hope. She was a visionary leader and a prophetic figure. Her vision can be summed up by her words: show yourself at all times glad and joyful, for God loves a cheerful giver. Lead us on, Mary Ward. Lead us on, Mary Ward. Lead us. Who is this woman? Where has she come from? What is she saying to us? Eyes fixed ahead, set on her goal, bearing her secret within. How beautiful are the feet of those who bring the gospel of peace. Step up to the challenge, step up without fear. All be well, for God is near. Lead us on, Mary Ward. Lead us on, Mary Ward. Lead us. Who is this woman? Where is she going? Why is she traveling so far? Striding out, spirited and strong, pursuing her dream to its end. Oh, take my hand and walk with me. Come and sing my song. Lead us on, Mary Ward. Lead us on, Mary Ward. Lead us. Who is this woman? What is she thinking? What is leading her on? The strength of the Spirit, the love of her Lord. This is what leads her going. How beautiful are the feet of those who bring the gospel of peace. Step up to the challenge, step up without fear. All be well, for God is near. Lead us on, Mary Ward. Lead us on, Mary Ward. Lead us. We are the women when we have courage to stand up for what we believe. Speaking the truth, trusting in God, acting for freedom and justice. Oh, take my hand and walk with me. Come and sing my song. How beautiful are the feet of those who bring the gospel of peace. Step up to the challenge, step up without fear. All be well, for God is near. Lead us on, Mary Ward. Lead us on, Mary Ward. Lead us. The language of music is the most universal one. It was articulated
many tulips in this song. Now, brace yourself for a high-octane dose of entertainment. Dance is a special art form that surpasses all boundaries and can be understood and felt by everyone who has an aesthetic sense. It liberates and empowers the performers. With these words, we invite our vibrant students to present before you a mesmerizing dance performance. So, get ready to rock with the rhythm. मीठी मीठी सी मुनिया सर पे डाले ये दुनिया क्यों क्यों हो सोनी सोनी सी कुड़ी नो मौज में रहने देना दुनिया क्यों है कितनी शानदार कुड़ी ये कर देगी कमाल इसे झूमने दे अपनी बीच से कुड़ी नो नचने दे नचने दे तू आज लगाने दे झुमके की बात सुनानी तेनू हसदा देख के चलूं मैं भुल जानी दस दे कितना गल तेनू समझानी वो अब तू छड़ दे जो है तेरे नाम नखरे क्यों कर दिए मैनू जचदा नहीं इन्ना सवाल कर दिए ना मैं सुनता नहीं होर दस कितनी तारीफ चाहिदी है तेनू होर दस कितनी तारीफ चाहिदी है तेनू
रख दो गुलाब दो जरा इतर गिरा उछलती कुड़ी उछलती कुड़ी उछलती कुड़ी बजना दी भैन तेनू बिजली बिजली कहन जिदे उत्ते गिरदी बचदा भी कख नी तारे भी डरके रैन सिंड्रेला ओ सिंड्रेला तेरे उत्ते आया दिल मेरा घुंघरू पा के नचाया आ जेड़ा काला गंजड़ पाया तेरा सारा ही पछे लाया तेरा सारा ही पछे लाया तेरे तक के गोरिए नैन बचदी कुड़ी बचना दी भैन तेनू बिजली बिजली कहन जिदे उत्ते गिरदी बचदा भी कख नी तारे भी डरके रैन सिंड्रेला Let's go! Dancing is the poetry of the foot. The body says what words cannot when we dance. This was definitely articulated well by the students just now. It was an undoubtedly an energetic performance. How about a song after this scintillating performance? Sure, next we have a Hindi song paying tribute to our parents. एक गीत हमारे अभिभावकों के लिए। जी, ये तो सत्य है कि भगवान है और हर पल हमारे साथ है, परंतु हम पर अपनी कृपा बरसाने के लिए उन्होंने हमें हमारे माता पिता दिए हैं। प्रस्तुत है आप सबके सामने हमारे जन्मदाताओं के चरणों में एक गीत और भरी पुष्पांजलि। है
A father's goodness is higher than the mountain, and a mother's goodness is deeper than the sea. Indeed, Sadhvi. So, what do we have next? We have a beautiful dance drama celebrating womanhood presented by the students of class 11. And what are they going to portray? They are going to portray three of the timeless and classic literary works of Gurudev Rabindranath Tagore. These stories revolve around three strong female protagonists challenging the patriarchy and emerging as empowered and liberated women. Let's go back in time and delve in the 20th century India, taking a glimpse into the world of the Nobel laureate, who is the composer of our national anthem. I'm reminded of a few words from Gitanjali. Deliverance is not for me in renunciation. I feel the embrace of freedom in 1,000 bonds of delight. First Indian to be ever awarded the Nobel Prize for Literature, that's Gurudev Rabindranath. Literary scholar, worked as a poet, writer, playwright, composer, philosopher, social reformer, and painter. He reshaped Bengali literature and music, as well as Indian art with contextual modernism in the late 19th and early 20th centuries. Through his body of rich literary work, he introduced the idea of feminism in India. Today, we present before you three of his immortal female protagonists he created between 1903 and 1930, who have survived the wrecks of time and are as relevant today as they were 100 years ago. Now, we are going to pay a tribute to Gurudev Rabindranath Tagore by the song Anandadhara Bohiche Bhuboge, which means happiness is all around in the universe. আনন্দ গান বাজে সে গান কবে গভীর রবে বাজিবে হিয়া মাঝে To the year 1903, when Gurudev created the character Vinodini in the novel Chokhe Bani, one of the most poignant representations of the new women of those times. Tagore portrayed the educated and urban Indian woman who realized human rights and equality. But the battle was fierce enough against the society. As we visualize Vinodini, her revolutionary thoughts, and imagine her as the modern and beautiful widow in a patriarchal society, we understand that there was no happy ending for a widow in those times. बिहारी और विनोदिनी एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे, परंतु चूंकि विधवा विवाह को समाज में स्वीकृति नहीं मिली थी, इस
विवाह न हो पाया। अब दोनों 6 साल बाद मिलते हैं। सुनिए, क्या आपके पास दिया सलाई है? आवाज जानी पहचानी सी लग रही थी, लेकिन मन का भ्रम समझकर टाल दी। परंतु जब उसे देखा तो मानो जैसे मेरी आंखें चौंधिया सी गई। हटा, बिहारी बाबू आप? विनोदिनी तुम? 6 सालों की तलाश, क्या वो सच में मेरे सामने खड़ी थी? यहाँ कैसे? यहीं पास में एक विधवा आश्रम में रह रही हूँ पिछले कुछ सालों से। मेरी नियति मुझे जहाँ ले जाती है मैं वहीं चली जाती हूँ, और मेरे मौलिक विचारों के कारण किसी भी विधवा आश्रम में 1 महीने से ज्यादा नहीं टिक पाती। कभी कभी सोचती हूँ अनपढ़ होती तो ज्यादा अच्छा होता, समाज की उपेक्षाओं को तो झेल पाती। यह वह दौर था जहाँ औरतों का पढ़ा लिखा होना गुण नहीं और गुण था। लेकिन एक बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई, तुम उस दिन घर छोड़कर क्यों गई? तुमने मुझे तक बताना जरूरी नहीं समझा? बिहारी बाबू आप एक डॉक्टर हैं, आपके सामने आपका पूरा जीवन है, और मैं नहीं चाहती कि मेरी परछाई आपके उज्जवल भविष्य को मैला कर दे। क्यों विनोदिनी, ऐसी क्या तकलीफ है तुम्हारी? क्या तकलीफ है? बिहारी बाबू एक पढ़ी लिखी विधवा लड़की की क्या तकलीफें हो सकती हैं? जो पाप मैंने कभी किया ही नहीं उसकी सजा मैं क्यों भुगत रही हूँ? क्या आपको पता है, मैं पढ़ना चाहती थी, मैं आगे बढ़कर कुछ बनना चाहती थी, लेकिन वो सब कुछ इन्होंने मेरी शादी के कारण छोड़ दिया। बिहारी बाबू मैं एक लड़की भी हूँ, मुझे सजना पसंद था, रंगों से खेलना पसंद था, मुझे अपने परिवार के साथ वापस जाना भी पसंद था, लेकिन वो सब कुछ छिन गया। ये कहाँ का न्याय है बिहारी बाबू, ये कहाँ का न्याय है? तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? बिहारी बाबू इस पूरे समाज ने मुझे बुरा माना है, मुझे गलत समझा है। मैं चाहती हूँ कि आप सब मुझे एक बार मेरी दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करिए, मुझे एक बार समझने की कोशिश करिए। We reached the year 1940. There Gurudev wrote his famous story, Stree Potter, which is an epistolary expressing women's plight and resentment with the way her life unravels. Renal, a girl of 15, has been married in an aristocratic family because of her beauty. But she prefers to be independent and secretly writes poetry. मृणाल को साहित्य एवं कविताओं से अत्यंत प्रेम था और वो बहुत अच्छी कविताएं लिखती थी, लेकिन 15 साल के गृहस्थ जीवन में उसके पति ने कभी भी उसे प्रोत्साहित नहीं किया, उसका उल्टा उसका मखौल उड़ाया। आज भी यही हो रहा है। मृणाल, मृणाल, कहाँ हो तुम मृणाल? हाँ आ रही हूँ। कब से कह रहा हूँ कुर्ते का बटन लगा दो और तुम होगी तो बस सुनती ही नहीं हो। जब से कटाई शुरू हुई है ना, समय ही नहीं मिलता, सारे नौकर छुट्टी पर चले गए। और इन साहित्य और कविताओं का समय मिल जाता है तुम्हें? अरे तुम्हारी कविता में तो ना लय है ना ताल है, कविता का तो बस बुरा हाल है। तुम्हें क्या लगता है मृणाल, ऐसी कविता लिख के क्या तुम कोई प्रख्यात कवयित्री बन जाओगी? इसीलिए मेरी माँ मेरी बुद्धि को लेकर सदा चिंतित रहती थी। उन्हें लगता था कि ये मेरे
अभिशाप है। आप सबके लिए तो औरत का युक्ति संगत होना एक अनजान सोच है, क्योंकि एक औरत तो बनी घर के कामकाज के लिए है। ओह, अब तुम मुझसे सवाल करोगी? तुम्हें और चाहिए ही क्या? इतना विद्रोह क्यों करने लगी हो तुम आजकल मृणाल? विद्रोह? आप कहते हैं कि मैं विद्रोह करती हूँ? बिंदु का क्या? उसने तो कभी कोई विद्रोह नहीं किया था ना। वो बेचारी अनाथ बालिका जो हम पे आश्रित थी, जिसका हमारे अलावा और कोई नहीं था, उस पे भी तो आप लोगों ने कितने अत्याचार किए। क्या फायदा हुआ उसके विद्रोह नहीं करने का? तुम कहना क्या चाह रही हो मृणाल? इन सब में मेरी गलती थी। भूलो मत, बिंदु अपनी मर्जी से 2 बार घर छोड़कर भागी थी। और तीसरी बार तो वो नहीं भाग पाई ना। आखिर में उसे आत्महत्या करना पड़ ही गया ना। ये उसकी नियति थी मृणाल, तुम समझने की कोशिश करो। ये उसकी नियति नहीं थी, वो तो जीना चाहती थी, उसे मजबूर किया गया था। उसका विवाह एक ऐसे पुरुष के साथ करा दिया गया जो कि मानसिक रूप से ही विकलांग था। ना मैं कभी बिंदु को भूल सकूंगी और ना ही मैं कभी खुद एक दूसरी बिंदु बनना चाहूंगी। अब मुझे अपने लिए जीना है, अब मुझे अपने सपने पूरे करने हैं। हाँ, किन सपनों की बात कर रहे हो तुम? वो साहित्य और कविताएं? हाँ, वही सपने। और अब अगर उन्हें पूरा करने के लिए मुझे इस 15 साल के रिश्ते को तोड़ना भी पड़ जाए तो मैं तोड़ूंगी। अगर आप मुझे लिखने दें तो ठीक है, नहीं तो क्या? तुम चली जाओगी भी तो जाओगी कहाँ और तुम करोगी क्या? मैं लिखूंगी, अपने सपने पूरे करूंगी। मैंने आज से पहले कभी भी इतना जीवन और स्वतंत्र महसूस नहीं किया। मैं ईश्वर की जादुई लहरों में तैरना चाहती, अब मैं जीना चाहती। मृणाल आज अपनी 15 वर्ष के वैवाहिक जीवन से मुक्त होगी। अब वह स्वच्छंद रूप से साहित्य सृजन में अपने आप को समर्पित कर सकती है। Not the ideal one, but the unreal yet. She challenged social evils and stood unflinched to accept her as a human, and that to live like a human, outside widowhood, untouchability, the rigid caste system and patriarchy at large, to emerge as evolutionary beings who strive to dwell in dynamism, not possibly change. Ushering our footsteps into the world of another short story entitled Oporichito, we come across Kalyani, who is a serious instance of emancipation in the evolutionary times of the 1930s feminist themes of renewal. She refuses Anupam's proposal of marriage at the end of the story, despite her father's willingness, and prioritizes her emancipation over the domesticity of the patriarchal society. Dowry has been a perennial and most evil system clinging to the patriarchal setup. 6 साल पहले कल्याणी का विवाह अनुपम से तय हुआ था, परंतु 12 चौखट से ही लौट गई, क्योंकि कल्याणी के पिता ने कल्याणी का विवाह एक ऐसे घर में करने से इनकार कर दिया जो दहेज के लोभी है। आज अचानक वे मिलते। बच्चों ध्यान से चलो, प्लेटफॉर्म पे बहुत भीड़ है। ट्रेन का समय हो गया है, जरा देखो। अरे कल्याणी, अनुपम तुम? हाँ मैं। बहुत समय हो गया, तुम कैसे हो अनुपम? क्या तुम मुझसे क्रोधित हो? मैं तो खुद आत्मग्लानि
जवानी में जी रहा था। मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाया, ना खुद के लिए बोल पाया, जबकि मैं तुमसे अत्यंत प्रेम करता था। तुम्हारी ये ग्लानि उस दिन कहाँ थी जिससे तुमने हमारा विवाह तोड़ा अनुपम? एक ऐसा समाज जहाँ एक लड़की का जीवन समाज के अनगिनत कायदे कानूनों पर चलता हो। लोग तो आज भी ये कहते हैं, ना जाने लड़की में क्या कमी थी कि बारात मंडप से लौट गई। गलती तुम्हारी नहीं, गलती तो मेरी थी। क्या तुम मुझे एक बार मौका दे सकती हो? मैं तुम्हें कभी निराश नहीं होने दूंगा कल्याणी। अनुपम, मेरे जीवन पर अब सिर्फ मेरा हक नहीं, मैं अब इन अनाथ बच्चियों के लिए जीती हूँ। मेरा जीवन अब उनको समर्पित है। मैं इन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहती हूँ ताकि ये समाज इनकी उपेक्षा न कर सके, इनका शोषण न कर सके। और तुम सोचते होगे अनुपम, मुझसे विवाह करके तुम अपनी क्लास से छुटकारा पालोगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन कल्याणी, क्या तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी? अनुपम, मैं तुम्हारी सदैव आभारी हूँ। हम दोनों का विवाह ना होना मेरे जीवन के नए दिशा का जरिया बना। मैं अपने आप में पूर्ण हूँ, मुझे अब किसी पुरुष की आवश्यकता नहीं है। मेरा जीवन परिपूर्ण है। कल्याणी, क्या मैं तुम्हारे इस नेक काम में तुम्हारा साथ दे सकता हूँ? अनुपम, मैं तुम्हारे इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगी। आओ, मैं तुम्हें बच्चों से मिलवाती हूँ। बच्चों, अनुपम भैया को वो वाला गाना सुनाओ जो मैंने तुम्हें उस दिन सिखाया था। This song was written by Rabindranath Tagore way back in the 1940s for the emancipation of women, to empower women of his time. This song was also incorporated in the Women's Regiment of the Indian National Army by Subhash Chandra Bose. Recalling the quote of Rabindranath Tagore, men can only think. Women have a way of understanding without thinking. A woman was created out of God's own fancy. Yes, I agree with you, Abhika. The 11th standard students beautifully portrayed the self-assertion and determination of young women folks through the dance drama. My spirit is calm, my soul is fierce, and my spirit is wanting me to dance. Through all the chaos of the mind, I choose to dance through my life. It has always been an integral part of Indian classical dances. Women in ancient times have portrayed the divine and feminine energy through various dance forms. So, hold your seats tight because the students of class 11 are here to present an enchanting piece of our diverse culture, Kathak. Nandana
रोक रही, रोक रही, रोक रही, सारी शाम रोक रही और चकमक चूम रही, मुख चूम रही, मुख चूम रही, सर से मोरी चुनरी गई, 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 सर से मोरी चुनरी गई, सरक, 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 सरक। प्रीत हो मेरी बांसुरी का गीत हो तुम प्रेम हो तुम प्रीत हो मनमीत हो राधे मेरी मनमीत हो तुम प्रेम हो तुम प्रीत हो मनमीत हो राधे मेरी मनमीत हो। Wasn't that an awe-inspiring performance, Zoya? Yes, it really was. And after this spiritually elevating performance, let us indulge in another lyrical presentation. We Are the World is a charity single originally recorded by the supergroup USA for Africa in 1985. Oh, the one written by Michael Jackson. Yes, and Lionel Richie too. The theme of the song is based on the fact that everyone in the world is interconnected and part of God's big family. Hence, we must love and help each other, regardless of our race, class, and ethnic identities. We must stop pretending that someone else will help those in need. Rather, offer to give to such victims. Yes, I do agree. Thy need is greater than mine. So, we bring before you the students of class 8 and 9 who will convey this profound message of giving to the needy through the rapturous song, We Are the World. There comes a time when we heed a certain call, then the world must come together as one. There are people dying, and it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all.
it was. Won't you agree, Sada? Yes, it was. It taught us to be courageous and to be strong. Now I'm eager to know what's next in line. It's a Hindi play. Oh, is it? What is it about? दीपदार एक ऐतिहासिक घटना पर आधारित नाटक है। इसमें चित्तौड़ के राजा महाराणा सांगा का निधन हो गया है। उनके 14 वर्षीय बेटे उदय सिंह की रक्षा महल की धाई पन्ना करती है। प्रस्तुत एकांकी में पन्ना धाई के त्याग, समर्पण, बेटे के बलिदान और स्वदेश प्रेम को दिखाया गया है। दासी पुत्र बनवीर राजा के बेटे उदय सिंह को मारकर निष्कंटक राज करना चाहती थी। क्या उसे मारकर? हाँ, परंतु पन्ना धाई अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए क्रूर और अन्याय बनवीर से चित्तौड़ के उत्तराधिकारी उदय सिंह को बचा लेती है। भारतीय स्त्री स्नेह और ममता की प्रतिमूर्ति होती है, किंतु देश के लिए अपना सर्वस्व त्याग करने के लिए सदैव तत्पर रहती है। पन्ना धाई अपने कुलदीपक चंदन का बलिदान कर देती है। तो आइए अब हम एक ऐसी नारी के बलिदान की कहानी को इस मंच पर देखते हैं जो हमें रोमांचित करने के साथ साथ देशभक्ति के भाव से अभिभूत कर देगी। बहुत अच्छे हो कुंवर, तुम तो चित्तौड़ के सूरज हो, महाराणा सांगा के छोटे कुंवर। सूरज की तरह तुम्हारा उदय हुआ था, तभी तो तुम्हारा नाम कुंवर उदय सिंह रखा गया है। अच्छा, तो ये बात है धाई माँ। पर धाई माँ, क्या ऐसा कि सूरज का उदय होता है? क्योंकि मैं तो रात में भी हंसना चाहता हूँ। कुंवर, दिन में तो तुम चित्तौड़ के सूरज हो ही, और रात में तुम राजवंश के दीपक हो, महाराणा सांगा के कुल दीपक। छोटे से फिल्म में जैसे नाचता है ना, लड़कियां कैसे नहीं नाची। अब चलो ना धाई माँ, मैं नहीं देखूंगी कुंवर। तो जाओ, मैं भी नहीं करूँगा। ना मैं उदय सिंह बनूंगा और ना ही कोई दीपक। रूठ गए कुंवर, रूठने से राजवंश नहीं चलता। देखो तुम्हारे कपड़ों पे कैसी धूल छाई है, दिन भर तलवार का खेल खेलते रहते हो। थक गए होगे, जाओ विश्राम करो, और यह तलवार मैं रख दूंगी। तुम्हें तलवार से डर लगता है, जो बार बार इसे रखने की बात करती हो। तलवार से डर? चित्तौड़ में किसी को
तलवार से डर नहीं लगता कुंवर। जैसे लता में फूल खिलते हैं ना, उसी तरह वीरों के हाथ में तलवार खिलती है, तलवार चमकती है। अब तुम मुझे मनाने लगी धारणा। देखो धारणा, अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो चलो, वरना मैं अभी नहीं चला जाऊंगा। नहीं कोई नहीं, रात में तुम अकेले नहीं जाओगे। चारों ओर जहरीले सर गिरे हैं, किसी भी वक्त दस सकते हैं। सर कैसे सर धारणा? तुम नहीं समझोगे कुंवर। जाओ विश्राम करो, भोजन के लिए मैं जगा दूंगी। अब तुम्हें ना ही भोजन करूंगा और ना ही अपनी शैया पर सोऊंगा। मैं जा रहा हूँ। कुंवर रुको, मेरे लाल टूट गए। कुंवर का टूटना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। बना लूंगी राजकाज। धारणा को प्रणाम। कौन? मैं सोना, रावल रूप सिंह की लड़की। कुंवर जी कहाँ है? कुंवर जी थक गए हैं, सोना चाहते हैं। सोना चाहते हैं तो मैं भी तो सोना हूँ। चुप रह सोना। कुंवर जी टूट कर सोने चले गए। तुम लोग उन्हें नाच गाने की ओर खींचना चाहती हो। आज हम लोगों ने दीपदान किया और खूब नाचा। कुंवर जी भी बड़ी देर तक हमारा नाच देख रही थी। उन्हें हमारा नाच बहुत अच्छा लगा। यूँ तो धारणा आज कुछ सफल लेना था, फिर भी महाराज पंडित ने कहा मेरे बनवाए हुए मयूर बचपन में दीपदान करो। तो क्या यही त्योहार मना रही हो? तो मैं क्या धारणा, सारे नगरवासी दीपदान का त्योहार मना रहे हैं, केवल तुम्हें छोड़कर। बस भीड़ के अनुग्रह ने तुम्हें पागल बना दिया है सोना। धारणा, पागल कौन नहीं है? सारे नगरवासी आपके और सब हैं। तुम कुंवर सिंह के स्नेह में पागल हो और मेरा ना पूछो धारणा। कुंवर को छोड़ो सोना, वे थक गए हैं, सो रहे। तुम जाओ। माँ तो तुम भी महाराज पंडित का साथ दो, दीपदान करो। क्या मेरे उस उत्सव में जाने या न जाने का संबंध उस बलबीर की इच्छा से है? तो कम से कम कुंवर को भेज देती। कैसे भेज देती? कैसे भेज देती? कितने आदमियों के बीच? महाराणा सांगा के वंश के एक वे ही तो जाने हैं। महाराणा रतन सिंह 3 ही वर्ष राज कर सूर्य लोक पधार गए और विक्रमादित्य वे भी बलबीर की कूटनीति में टिक न सकेगा। धारणा तुम विद्रोह की बात करती हो। आंधी में आग की लपट तेज होती है सोना। तुम भी उसी आंधी में लड़खड़ा करती होगी। न जाने कब वह हवा का झोंका तुम्हारे गीत को ले जाएगा। चित्तौड़ राजरंग की भूमि नहीं है, जौहर की भूमि है। यहाँ आग की लपटें नाचती है, सोना जैसी दावल की लड़कियां नहीं। धारणा बस कीजिए, चली जाए यहाँ से। देखना, इस त्योहार के पीछे भी कोई कूटनीति होगी। पूछना बलबीर से इस राजरंग का अर्थ क्या है। माँ, 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 माँ चंचल सोना आज इतनी सुनती क्या जा रही थी? भोजन कर लो मेरे लाल। सज्जा ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा भोजन बनाया है। लगता मैं तुम्हारी माला ठीक कर दूं। माँ, कुंवर की माला को भी ठीक कर देना, वह भी टूट रही है। ठीक है चंदन, वह भी ठीक कर दूं लाल। धारणा, मैं सामने लोगों ने बलबीर को कहते सुना कि अगर वह इस राज्य का राजा नहीं बना तो वह कुंवर साहब को भी सिंहासन का अधिकारी नहीं बनने देगा। वह निष्कंटक इस राज्य पर राज करेगा। धारणा, विलासी और अत्याचारी राजा कभी निष्कंटक राज्य नहीं कर सकता। लोगों ने उसे पकड़ा नहीं, सिपाही चुपचाप देखते रहे। सिपाहियों को भी उसने अपनी तरफ मिला लिया है। अब क्या होगा सामने? थोड़ी देर बाद ही बलबीर कुंवर साहब को मारने आए। आज की रात अंधेरी रात है। आज की रात ही वो अपने को पूरा महाराणा बना लेगा।
लेना चाहता है। भाई माँ, हमें कुंवर की रक्षा करनी होगी। कुंवर की रक्षा? कुंवर की रक्षा अवश्य होगी। काशी पुत्र बलवीर को चित्तौड़ सहन न कर सकेगा। लेकिन तुम कुंवर की रक्षा किस तरह करोगी? मैं अंधेरी रात में कुंवर को लेकर उभर कर गांव चली जाऊंगी। और चंदन? चंदन कहाँ रहेगा? जहाँ भवानी तुलजा उसे रखेगी। मेरे महाराणा का नमक मेरे रक्त से महान है। नमक से रक्त बनता है, रक्त से नमक नहीं। धन्य हो भाई माँ, लेकिन आते समय मैंने देखा था कि बलवीर के सामने तुम्हारा महल घेरने को आए। एक ओर से तो तुम्हारा महल घेर ही चुका है। तब मैं स्वयं तलवार लेकर अपने कुंवर की रक्षा करूंगी। भैरवी बनकर युद्ध करूंगी। युद्ध? युद्ध में तो तुम्हारे प्राण जाएंगे और कुंवर साथ ही नहीं बचेंगे। फिर क्या करूंगी साथी? घुटने टेक कर कुंवर की जीवन भिक्षा मांगूंगी। वह भी तो मनुष्य है, उसमें थोड़ी तो दया होगी। महाराणा की हत्या के बाद दासी पुत्र मनुष्य है, वह तो जंगली पशु से भी गया बीता है। फिर मेरे कुंवर कैसे बचेंगे? कैसे बचेंगे मेरे कुंवर? खाना इस समय शक्ति नहीं, कोई युक्ति ही काम दे सकती है। देखो, कोई आ रहा है। घेर लो चारों तरफ से महल को। महाराज बलवीर का आदेश है। कीरत बारी है। देखो, कोई अंदर से बाहर न जा पाए। और बाहर से अंदर भी ना आ पाए। अन्नदाता कौन? कीरत बारी है। भाई माँ के चरण का। कीरत तुम आ गए? बाहर तो कोई नहीं। अन्नदाता, बाहर तो सिपाहियों का डेरा लग रहा है, तो तुम महल में बेखटके चले आए। अन्नदाता, मैं तो झूठी पत्तलें उठाता हूँ, कोई माल मत्ता तो मेरे पास है नहीं। एक टोकरी है और उसमें पत्ते हैं। कुंवर जी ने प्यार कर ली भाई माँ, मैं झूठन पालू नहीं। कुंवर जी जुग जुग जिए भाई माँ। जब से कुंवर जी बूंदी से आए हैं, तब से सगर महल में उजियारा कर दिया है। मैं तो उनके लिए अपने प्राण भी हासिल कर सकता हूँ। हाँ, तो वह मौका आ गया कीरत। मौका? कैसा मौका? कुंवर जी को बचाने का। कौन है जिसने सूरज पे धूल उछालने की कोशिश की है? बलवीर। तो मैं तलवार ले आऊं? नहीं, अब तलवार नहीं, तरकीब भी काम दे सकती है। हुकुम दे अन्नदाता, तुम बारी हो, तुम्हें बाहर जाने से कोई नहीं रोकेगा। तुम कुंवर को अपनी टोकरी में लेटाकर उन्हें गीली पत्तलों से ढक देना और उन्हें महल से बाहर ले जाना। वाह वाह, अन्नदाता ने खूब सोचा, खूब सोचा। मैं ऐसे निकल जाऊंगा कि सारे सिपाही मेरा मुंह देखते रह जाएंगे। तो कुंवर जी कहाँ हैं? सो रहे हैं। आज वे भूमि पर ही सो गए। तुम उन्हें हल्के से टोकरी में रखना, वे जागने न पाए। जी अन्नदाता, तुम मुझे कुंवर को लेकर पेरिस नदी के किनारे मिलना, जहाँ शमशान है। ठीक है अन्नदाता, वही मिलूंगा। तो जाओ कीरत, तुम जैसे एक छोटे आदमी ने चित्तौड़ के मुकुट को संभाला। मैं कुंवर जी को इतने प्यार से देता हूँ कि उन्हें पता भी नहीं चलेगा। सुरक्षित तो है। हाँ, कुंवर जी सुरक्षित है। लेकिन कैसे? कीरत ने कुंवर को अपनी टोकरी में लिटा दिया और उन्हें महल से बाहर ले गया। लेकिन बनवीर तो यहाँ जरूर आएगा और फिर कुंवर को यहाँ ना पाकर तुमसे पूछेगा तो तुम क्या कहोगी? कह दूंगी मैं नहीं जानती। यदि वे नहीं माने तो? फिर क्या करूंगी?
अपने जीवन भिक्षा मांगूंगी। बनवीर के सिर पर कूद सवार वह कुंवर को यहाँ ना पाकर तुम्हें जरूर मार डालेगा। मुझे अपनी चिंता नहीं है सामने। लेकिन चिंता कुंवर की तो है, तुम्हारे बिना वे भी तो जीवित नहीं रह सकेंगे। फिर तुम्हारा ये बलिदान चित्तौड़ के किस काम का? सचमुच कुंवर जी मेरे बिना कैसे जिएंगे? मैं बलबीर को धोखा दे दूंगी। लेकिन तुम बनवीर को धोखा किस तरह दोगी? कुंवर की शैया पर किसी और को नहीं डालूंगी। बलबीर गुस्से में अंधा रहेगा कि पहचान ही न सकेगा शैया पर कौन सोया है। लेकिन तुम कुंवर की शैया पर सुलाओगे किसे? उसे सुला दूंगी, उसे सुला दूंगी सामने, उसे सुला दूंगी। मेरा लाल, मेरे आंखों का तारा चंदन को सुला दूंगी सामने, चंदन को सुला दूंगी। उसे हत्यारे के तलवार के नीचे रख दूंगी। कह दूंगी उसके नन्हे से कलेजे पर हल्के से प्रहार करना। खाना, ये तुम क्या कह रही हो खाना? तुम चंदन के साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं ऐसा नहीं सोच सकूंगी खाना। मैं ऐसा नहीं सोच सकूंगी। मैं ऐसा नहीं सोच सकूंगी खाना। सामने चली गई, कहती है मैं सुन भी ना सकूंगी। जो मुझे करना है सामने सुन भी ना सकेगी। हमारी शक्ति ने इस राजवंश की रक्षा में मैं अपना रक्त दे सकूं, अपने चंदन को दे सकूं, मैं भी दीपदान कर सकूं। माँ, 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 माँ देखो, मेरे पैर में चोट लग गई है। क्या हो गया लाल? अरे इतना रक्त निकल रहा है, यह चोट कैसे लगी? माँ, मुझे सज्जा ने बताया कि महल के चारों ओर सिपाही इकट्ठे हो रहे हैं। मैं देखने के लिए ऊपर झरोखे पे चढ़ गया माँ, परंतु अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया माँ, और यह चोट लग गई माँ। चोट ठीक हो जाएगी लाल, अब ज्यादा बातें न करो। गद अधिक हो गई, तुम सो जाओ। कहाँ सो माँ? सामने तो अभी रसोई घर में होगी, उसमें तो अभी तक शैया भी तैयार न की होगी। तो तुम कुंवर की शैया पर सो जाओ। और कुंवर जी बुरा मान गए तो? कुंवर को मैं समझा दूंगी। माँ, तुम कितनी अच्छी हो। आज मैं भी कुंवर की शैया पर लेट कर देखूं। आहा, कितनी नरम शैया है। जी करता है सदा इसी पर सोता रहूं। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, आज मेरा जी कुछ ठीक नहीं। तुम सो जाओ, कुंवर को खिला के मैं भी जल्दी सो जाऊंगी। अच्छा ठीक है माँ, मैं तुम्हारी आज्ञा नहीं टालूंगा। देखो मैंने आंखें भी बंद कर दी। सो जाओ। चित्तौड़ की अच्छी अच्छी कहानियां सोचते सो जाओ। तुम्हारी मातृभूमि पर कितने वीर हुए जिन्होंने अपने राष्ट्र के रक्षा के लिए अपने प्राण भी गंवा दिए। माँ, 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 मैं आंखें बंद कर तुम्हारी बातें ही सुन रहा था कि तभी एक काली छाया मेरे पास आई और उसने मुझे मारने के लिए तलवार उठा लिया। माँ, वो काली छाया माँ, वो काली छाया माँ। क्या हो गया लाल? मैं तुम्हारे पास ही तो बैठी हूँ। यह कौन सी काली छाया आएगी? तुम निश्चिंत होकर सो जाओ। कोई काली छाया नहीं आएगी माँ, पर पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही है। तुम कोई गीत सुना दो। अच्छी बात है चंदन,
गीत ही गाऊंगी, अपने लाल को सुला दूं। उड़ जा रे पंखेरुआ, साँझ पड़ी चार पहर, पाथर डली चोरी, बेड़िया खड़ी खड़ी, उड़ जा रे पंखेरुआ, आज पड़ी। बेड़ा लाल सो गया। मैंने अपने बेटे को ऐसी निद्रा में डाल दिया जिससे वह कभी नहीं जगेगा। सर पड़ी है तो सर पड़ी, अब मेरे बेटे को खा जाती है। आज अंतिम दिन था और मेरा लाल बिना खाए सो गया। मैं ऐसी देवी हूँ जो अपने भक्त को ही खा जाती है। पूरे मेवाड़ में सिर्फ एक ही अच्छी धाई माँ है, वरना मैं ऐसी धाई माँ को प्रणाम करता। पर धाई माँ की आंखों में आंसू नहीं, आंसू नहीं है। आज के दिन पूजन नहीं किया? अरे आज तो उत्सव का दिन है, आनंद का दिन है। आज मेरे महल में 300 सामंतों ने भोजन किया। आज कीरतवारी की टोकरी देखती, भोजन उठाते उठाते वह तो जिंदगी भर के लिए थक गया होगा। जिंदगी भर के लिए तो कहाँ है कुंवर उदय सिंह? आज मैं अपने हाथों से भोजन करूं। कुंवर जी सो गए, वे किसी और के हाथ से भोजन नहीं करते महाराज। मैं उन्हें खिला दूंगी। आज का दीपदान भी तुमने नहीं देखा? मेरे लिए दीपदान देखने की बात नहीं, करने की बात है। एक बात कहूं वरना मैं तुम्हें मेवाड़ से एक जागीर देना चाहता हूं। वहां तुम्हारे लिए तुलजा भवानी का मंदिर बनेगा, मंदिर। वहां के लोग तुम्हें इतनी श्रद्धा से पूजेंगे कि तुम सबकी देवी बन जाओ। पति! महाराणा गंभीर ने कहा, मैंने पल भर के लिए तुम्हें देवी क्या कह दिया? तुम देवी बन गई। देवी को मेरा प्रणाम। देखो, यह मोह ममता छोड़ो, उदय सिंह को मुझे दे दो और मैं यह तलवार। इस तलवार पर रक्त क्यों लगा है? रक्त तो तलवार की शोभा है, पर इस तलवार को वापस महल में रख लो महाराज। क्या तुम्हें भय लगता है? आधी रात हो चुकी है, जाए विश्राम करें। विश्राम मैं करूं? बंदी जिसे राज लक्ष्मी को पाने के लिए दूर तक यात्रा करनी है, मैं कुंवर उदय सिंह को अपने साथ ले जाऊंगा। नहीं, यह नहीं हो सकता महाराज बंदी। तो कुंवर उदय सिंह के बदले जो मांगोगी वह दिया जाएगा। या तो रणभूमि पर चढ़ूंगी या तो चिता पर। दो में से किसी पर भी चढ़ ना सकोगी, बनना। ओ बनवीर, हत्यारा बनवीर! महाराणा गंभीर को हत्यारा गंभीर नहीं कह सकती, बनना। हत्यारा गंभीर कहने वाली जीभ काट दी जाएगी। तो काट दो मेरी जीभ और निकल जाए यहाँ से। तुम तो कुंवर जी के संरक्षक थे ना? रक्षा के बदले हत्या करोगे? नहीं, यह नहीं हो सकता। दूर हट दासी, यह नाटक बहुत देख चुका। कुंवर उदय सिंह की हत्या है मेरे राज सिंहासन की सीढ़ी है। बालक को सुला दिया है, उसका मुंह भी ढक दिया है। बारे दाई माँ, बालक के मरने पर भी ममता का ध्यान रखती है। शैया से दूर हट पड़ना। आज मैं इसे चिर निद्रा
आज बनवीर राजा बन गया, बनवीर महाराणा बन गया। मेरा लाल, मेरा बेटा, मेरा लाल। आज मैंने भी दीपदान किया, अपने जीवन के दीप को रक्त की धारा पर जलाया। पात्र परिचय। नृत्यांगनाएं दीक्षा, श्रेया राज, अनुष्का शेखर, श्री सोनी, साची, अदिति, विदुषी सिन्हा एंड सभ्यता। मुख्य पात्र अनन्या सिंह एज उदय सिंह, सृष्टि एज पन्ना धाय, अमृता आनंद एज सोना, सरोज आफरीन एज सांगी, सिद्धा चतुर्वेदी एज चंदन, प्रतिची प्रिया एज सीरत, श्रेष्ठा सिंह एज बंदी सिपाही, माही गुप्ता, दिव्या ज्योति, वैष्णवी, कृतिका, कृतिका राज, मुस्कान कुमारी, यशवी राज, स्तुति ठाकुर, श्रेयसी चौधरी एंड मदीहा आलिम and the narrator Sadaf Imran Khan. Dhanyavad. An inspiring play which depicts the sacrifices of a mother who is an example of selfless love. Now, let us gear up for some tickling moments of fun and frolic to lighten up our spirits. I have a question, Alvira. What, Anushka? What do you call a bull that sleeps? A bull that sleeps? I don't know. A bulldozer. Okay, now even though I have a question for you. Go ahead. Do you know which is the most shocking city in the world? Oh, I do. Electricity. We guarantee and assure laughter at the small hilarious act. So, welcome the Laughter Masters with a short humorous performance. मैं हूँ कंपाउंडर कमला कपूर और आज मैं आप सबके सामने कुछ पेश कर रहा हूँ। एक क्या चाचा, कैसे हैं? अरे हाँ, चर्चा किसको बोलते हो? तुम्हारा बाबूजी का भाई लगते हैं। हाँ? भैया बोल भैया। अरे हाँ भाई भैया। अरे भैया जी, सुनने में आया है डॉक्टर झटका राम जो हैं 100 रुपए में इलाज कर रहे हैं और अगर इलाज असर नहीं किया तो 1000 रुपए वापस दे रहे हैं। क्या ये बात सही है? अरे हाँ, डॉक्टर झटका राम है ना, अपने डॉक्टर है, अपने भरोसे बिजनेस चलता है। अभी उन्होंने स्कीम निकाले 100 रुपए लेंगे तुमसे इलाज करेगा। अगर इलाज का फायदा होता है ठीक है, अगर नहीं हुआ तो तुमको 1000 रुपया वापस करो। अब देख लो भैया, तुम्हारा किस्मत में क्या है, 1000 रुपया मिलेगा तो 100 रुपया गवा दोगे। हम भी व्यापारी का बेटा है, ऐसे थोड़ी हार जाएंगे। पूरा 1000 रुपए का 1000 रुपए वसूल के ही रहेंगे। एकदम एकदम, तुम वसूले लो। जी भैया, धन्यवाद। अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो व्यापारी का बेटा? पैसा हमें को देना है, हमने भरोसे
कोई इलाज बताइए जरा। ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम लग रहा है। जी डॉक्टर साहब। अच्छा सर रुकिए, इलाज करते हैं। नर्स, नर्स। यस डॉक्टर। जरा इनको 22 नंबर डब्बे वाली दवाई ला कर दीजिएगा। आइए, पिलाइए इनको। आजू डॉक्टर साहब, ये तो पेट्रोल था। Congratulations, आपके जीत का स्वाद वापस आ गया। धन्यवाद डॉक्टर साहब। हुआ मैं पानी का बेटा। क्या भैया, क्या बताए, कहाँ मिला? डॉक्टर साहब हमको पकड़ लिए। मेरे जीभ का स्वाद चला गया। तो पकड़ लिए। जी भैया। अपने को ऐसा कुछ समझने वाला बात। अब वो ठहरे दिल्ली के इससे पढ़ेगा, MBBS निकालेगा। अब मुझे उनके पास जाना होगा कि तुम्हारे पास एक समझने वाला बात। वो बैठे क्या कर रहे? राम राम भैया। माचिस के लाइटर रख दो। नहीं भैया, धन्यवाद। क्या भैया, हमको याद रखे हैं कि भूल गए? अरे तुम दोबारा मैं पानी का बेटा। हाँ भैया, सोचे कि आज 1000 रुपए वसूल के ही जाएंगे। आपको तो पता ही है, हम व्यापारी का बेटा है। मतलब इस बार तुम वसूले लो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जी धन्यवाद भैया। अरे मेरे फिर भूल गए, हमारे घरों से ही चलता है उनका बिजनेस। अभी वो भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है, शौलत है, इज्जत है, ईमानदारी, बस कहाँ है वही नहीं पता है। मुझे तो पता नहीं। लीजिए भैया। राम राम डॉक्टर साहब। राम राम। डॉक्टर साहब, मेरा याददाश्त चला गया है, हमको कुछ भी याद ही नहीं रह रहा है। तुम तो तुम्हारे जाने पहचाने लगते हो। क्या पता डॉक्टर साहब। माँ बाप का नाम याद है? जी नहीं डॉक्टर साहब। शादीशुदा? क्या डॉक्टर साहब, जब हमको खुद ही का नाम नहीं याद है तो शादी का कैसे याद होगा? अच्छा अच्छा रुको रुको, कोई इलाज करते हैं। नर्स, नर्स। यस डॉक्टर। जरा इनको 22 नंबर डब्बे वाली दवाई कर दीजिएगा। पिलाइए इनको। एक मिनट डॉक्टर साहब, इस 22 नंबर वाली दवाई पे तो वही पेट्रोल था। Congratulations, आपकी याददाश्त वापस आ गई। राम राम डॉक्टर साहब। पानी का बेटा। क्या भैया, डॉक्टर साहब हमको फिर पकड़ लिए। मेरे को लगता है तुम्हारी किस्मत में ही नहीं है। तो आके तुम नहीं ले लो। नहीं भैया, खैनी हम नहीं खाए। ले लो। मुझसे अच्छा बुद्धि वर्धक चूरन है। नहीं भैया, हम खाएंगे नहीं। ठीक है जा, आराम जा। राम राम भैया। क्या भैया? अरे हमको तो अंधा बन के आना था। अरे भैया, थोड़ा ना हमको कुछ दिन से कोई दिखाई नहीं दे रहा, तो सोचे डॉक्टर साहब से इलाज करवा ले। तो डॉक्टर साहब के पास पहुंचा दीजिए। ठीक है दिखा जा बता दो। क्या भैया, जब को दिखाइए नहीं दे रहा है तो आप हमको कहाँ दिखा रहे हैं, हमको क्या पता। चलो पहुंचा दे। लेकिन पैसा तो हमें तो लगा। लीजिए भैया, निकाल लीजिए। ज्यादा नहीं निकाल लीजिएगा भैया। अरे हम काहे ज्यादा निकालेंगे, हम तो बस 100 का निकाले, उससे ज्यादा काहे नहीं। जी वो रखने दो। चल अरे इनका तो तकलीफ नहीं खत्म होता है, क्या ही कहा जाए। राम राम डॉक्टर साहब। राम राम, बोलिए बोलिए। डॉक्टर साहब,
मेरा ना एकदम हमको पिछला कुछ दिन से दिखाई ही नहीं दे रहा है, इलाज कर दीजिए ना। देखिए, इसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है, तो ये लीजिए आपके 1000 रुपए। डॉक्टर साहब, ये तो 500 का नोट है। कॉन्ग्रेचुलेशन, नहीं आपकी नजर भी वापस आ गई। थैंक यू, थैंक यू। There was a complete laughing riot after this amazing performance. Didn't it elevate our spirits, Pragya? Yes, it did. So, what's in store for us now? It's a dance performance on our Indian culture. Oh, is it? Yes, Indian culture has one of the most diverse and compelling traditions, and dance is one of an important aspect of it. Someone has rightly said, it takes an athlete to dance and an artist to be a dancer. So today, our girls will celebrate here our identity, our heritage. They will display our nation's ethnicity by performing 3 beautiful Shastriya Nritya. Oh, classical dances like Kathak, Bharatanatyam, Odissi. Yes, there are many more dance forms in our country. And today, the graceful dancers of class 8 and 9 are going to present before you these enchanting dance performances. Let us have a thunderous round of applause for the fusion dance performance. मेरे ढोलना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोलना सुन। मेरे ढोलना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोलना सुन, मेरी चाहते तो फिजा में बहेगी, जिंदा रहेगी, होके सदा। मेरे ढोलना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोलना। साथी रे मरती भी तुझको चाहेगा दिल, तुझे ही बेचैनियों में पाएगा दिल। साथी रे मरती भी तुझको चाहेगा दिल, तुझे ही बेचैनियों में पाएगा दिल। मेरे गीतों की साहिब तेरी राहतों की खुशबू है, तेरे बगैर क्या जीना, मेरे रोम रोम में तू है, मेरी चूड़ियों की खनखन से तेरी सदाएं आती है, ये दूरियां हमेशा ही नज़दीक हमको लाती है। Thank you.
मेरे ढोले मेरे प्यार की धुन मेरे ढोले सांसों में तेरे सरगमे हैं अब रात दिन जिंदगी में तो कुछ ना अब तेरे बिन सांसों में तेरी सरगमे है अब रात दिन जिंदगी में तो कुछ ना अब तेरे बिन धड़कनों की सरगोशी मेरे धड़कनों में बजती है मेरी जागती निगाहों में ख्वाहिश तेरी ही बजती है मेरे ख्याल में हर पल तेरे ख्याल शामिल है लम्हे जुदाइयों वाले मुश्किल बड़े ही मुश्किल है मेरे ढोलना सुन मेरे प्यार की धुन मेरे ढोलना Thank you. Now, I humbly request our Honorable Chief Guest, Mrs. Huma Akhtar, to please come up on the stage and to enlighten us with your wise word. A very warm good afternoon. I would like to thank Sister Josephine, all SJC sisters, and my wonderful teachers and all my dear friends for giving me this opportunity to present myself today. I would like to congratulate all the students who have given such a wonderful performance, which was both entertaining as well as educative. I would like to thank St. Joseph's Convent High School, all my sisters and all my teachers for building such a strong foundation for me that has contributed to my success today. As all the students are going to appear in next few years in the competitive examination, I would like to say that you will realize that you will be at the advantageous position among most of the aspirants there, and the only reason is the quality of education you are getting here. There are certain messages I would like to put forward, though these messages are very simple, but these are the golden rules to achieve success in life, which I have followed. There are some points I would like you to ponder upon. First one is, have vision in life, have some purpose, dream big, and don't be bogged down by the people who have the negative attitude and who say that, oh, this is impossible, oh, this is very difficult, or oh, this thing is only for people who are very intelligent. I would like to say, don't be bogged down by negativity. Then, there is no
substitute for hard work. There is no substitute at all. So work hard with honesty. It's very important to be very honest with whatever you do. And the very least stressed upon point is having a correct attitude towards whatever you are doing. So have a right attitude towards whatever you are doing, whatever you are pursuing. And I would like to say that apart from study, yes, here curriculum is built in such a way that through study you will have to do a lot of hard work, you will have to persevere. These things will be eventually percolating in your characteristics. Apart from that, if you are taking part in extracurricular activities, it's going to develop your personality and it's going to help you a lot later. So these were the messages I wanted to convey to my students, and to the parents I would say that your children are in the right hands and believe in your daughters. And as our country is a developing country, here many children are deprived of quality education because of various constraints like economic constraints, financial constraints. They do not have accessibility towards good schools. So here you students are having one of the best education. You are getting one of the best education in this country. So utilize it and work towards the betterment of the society. Contribute to the society. I wish you all the luck. Wish you all the best for your future. Thank you so much. Thank you, ma'am, for such inspiring and enlightening words of yours. We will definitely try to implement this in our day-to-day lives. Coming to the end of the program, now we will present the glimpses of the program which has been presented. Please have a look. to exhibit our talents. Thank you, sister, for this well
well-equipped auditorium, which has been newly constructed to manifest our flamboyance and artistry. Our heartfelt gratitude to our respected sisters at HAC who have gathered here to encourage our dear students for this amusing program. A special thanks to Sister Nirmala, those working in front of and those behind the stage, and the coordinators who are the cornerstone of our program. The task of our stage setters, technicians and music organizers also needs a special mention. I would also like to thank Manoj sir and Sudhir sir for your indispensable support. I would like to extend my immense gratitude to all our dear parents and well-wishers for having taken out time from your busy schedule to witness such spectacular performances of this evening. The support of our well-wishers has gone a long way in propelling our institution to new heights. And last but not the least, I would like to appreciate the zeal, fervor and hard work of our vibrant performers, the budding artists who have left no stone unturned to make this day a brilliant success. Thank you. Our cultural evening has almost reached its final denouement. I would like to thank you all on behalf of our prestigious institution for sparing your precious time and encouraging our young minds. It was really an enthralling day. And on this note, we would like to conclude this splendid program with a school song in honor of our SJC. This euphonic school song highlights our school's continuous effort in the area of education as well as co-curricular activities. Each line gives us a value-based message which we would like to imbibe and cherish in our life forever. I request you all to stand in attention for the school song. Lights are in the making here. Hearts are in the making here. Mighty undertaking here. Up and on. Up and on. We are arming for the fight. Pressing on with all our might. Giving wings for higher flight. Up and on. Up and on. Up the soil beat to St. Joseph's training. Play the game, keep the flame ever brightly burning. Up the soil beat, try with high endeavor. Play the game, keep the flame burning brightly ever. For a future without fear, for a youthful way to steer, for our lives to be sincere. Up and on, up and on. By ourselves we cannot fight, by our efforts or our might. What we need is heavenly light. Up and on, up and on. Up the soil beat to St. Joseph's training. Play the game, keep the flame ever brightly burning. Up the soil beat, try with high endeavor. Play the game, keep the flame burning brightly